It doesn't matter how many times you see the Great Pyramid, it's always astounding. Its size, its symmetry, and most impressively, that it's been here for 4,500 years. So take a moment and take it in. The tomb of the pharaoh Cheops, or Khufu, as he's known here. It's completely boggling. You look at it and you think, what is it? Talk to me, do something for God's sake, don't just stand there. It's sort of really weird. British archaeologist John Romer first saw the Great Pyramid 40 years ago. Ever since, like so many others, he's been trying to figure out how it was built. You know, there's an old Arab saying, man fears time, but time fears the pyramids. It's the oldest thing in the world. It just stands there. They're impressive today, but imagine the pyramids in ancient times. Completely white, shimmering in the desert. Visitors to this land must have just looked and wondered, and they probably asked the same question we ask today. How did they do it? In this land of pyramids, the Great Pyramid is pure perfection. It's not just a huge pile of rocks neatly placed on top of each other. Okay, so everyone talks about the great precision of this pyramid, but looking at it, it looks a bit rough, actually. Yeah, it doesn't look too bloody precise, does it? But made well before mathematics was recognised, 2,000 years before Pythagoras came up with his triangle theorem, its perfect angles and joins make this the most precise and most confounding building in the world. You just need to know where to look. So you get this angle, where this meets this, and you get the angle of the pyramid. Yes, exactly. Is that right? That's right. Now, this angle has to be so precise, because if you're a wee fraction of a degree out, where it takes off from the bottom, you're going to be yards out, up in the air up there. What is mind-boggling about the Great Pyramid is that it's a really complex building designed with some very simple tools, the naked eye and a piece of string. For much of it, they used a plumb bob, a string with a weight on the end, and they lined it up to the stars to create one of the most accurate buildings of all time. 45 centuries later, it is still more precise than many modern skyscrapers. Obviously, the precision was no accident, but how the ancient builders got it so right without modern equipment, no one's worked out until now. So what are we looking at here? Well, this is one of the 4 survey points. They're absolutely key to understanding how this pyramid was made. People have been tripping over these survey marks for centuries, but extraordinarily, John Romer is the first to see their significance, to crack one of the pyramid's startling secrets. That's the third one. That's the third in the line. Yep. This one here is really exciting. He's discovered a one-to-one plan of the pyramid mapped out on the Giza Plateau, right next to the Great Pyramid. The plan of the pyramid is the pyramid itself, because if you really want to keep something that accurate, the way to do is to make your plan at the same size as the finished thing. By measuring out the life-size plan with string, the Egyptians were able to get their ancient calculations, cubits, perfect. Now, this is the clincher, and whatever anybody says about what I'm telling you here, and they say, oh, that's all rubbish, they never did this, but what nobody's ever going to be getting away from is if you measure 40 cubits from that point out there, you get exactly the angle of the pyramid. Not vaguely, not nearly, but 51 degrees, 50 minutes. So what does that tell you? What are we standing on here? We are standing on a sort of design lab. This is where they controlled the architecture of the pyramid. But John's discovery doesn't stop there. He believes he's found yet another plan, one for the inside of the pyramid, similar to the exterior but slightly offset. The difference between the 2 grids giving the pyramid its magical angles. Why haven't these 2 plans been discovered before now? People were looking for a single design. And what I found was there was no single design, there were 2. You know, 2 designs just slightly disjuncted one from the other, rather like a double helix. And that, I think, put earlier people off, because what they imagined was there must be a single plan. It's called Mahmoud's Hole. You go in, and
And the stonework is just as well laid in here as it is outside. It's here, inside the Great Pyramid, where the accuracy counts, in its steep, confined corridors. This is the world's most accurate rock cut tunnel. These tunnels are so narrow because they weren't built for access, but as control lines for the builders. India. This is where the roots of the pyramid is. Thank This you. is where it all began. We're now entering the biggest space in the pyramid, the Grand Gallery. Look at that, huh? The Grand Gallery. And it is grand, isn't it? And the majesty of its polished walls Yes. and vaulted ceiling takes your breath away. When we get to this, which is the masterpiece of the whole bloody pyramid, this is... At the top of the Grand Gallery is the Great Step, a big piece of stone smack bang in the middle of the pyramid. And to the ancient Egyptians, partway through their construction, proof the pyramid was on track. It's the refoundation of the pyramid. You know, this is the center line. इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उनको कैसे लेकर के हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने 147 मीटर की हाइट पर बना इंसानों के द्वारा बनाई गई पिरामिड ये की सबसे साइज को ऊंची केयरफुली चोटी करीब देखने 4000 और समझने पर मालूम इतने पड़ता भारी है कि भरकम इसको पत्थर इसे बनाने बनाने के वाले लिए इस्तेमाल किए गए थे कि 4500 इस पूरे साल पिरामिड या का वजन उससे 6 भी मिलियन पहले टन अर्थ बताया के जाता है। एक्यूरेट इसे आप साइज कंपेयर से करो आज अच्छी के दिन तरह की सबसे वाकिफ ऊंची थे। इमारत ज़िंदगी बुर्ज की खलीफा वीडियोस से में एक जिसका बार वजन फिर सिर्फ खुशामदीद। 5 लाख टन है। इजिप्ट सबसे के हैरान कर पिरामिड्स देने के वाली बारे चीज में यहाँ हम पर ये है जितना कि आखिर ज्यादा इसे जानने बनाया की कैसे कोशिश है, करते क्योंकि हैं, उस जमाने में उतना लोगों ही के पास इसमें कोई क्रेन्स उलझते नहीं जाते थी, कोई हैं। इस बुलडोजर्स बात नहीं में थे, कोई कोई बड़ी शक नहीं है टेक्नोलॉजी कि नहीं थी, इजिप्ट यहाँ तक बेशुमार कि इन मिस्ट्रीज लोगों के से पास भरा व्हील्स हुआ तक है, नहीं थे, जिनको पहिए आज भी नहीं तक थे इन लोगों के पास, इजिप्टोलॉजिस्ट लेकिन फिर भी इन जानने लोगों की ने एक कोशिश ऐसा कर रहे मॉन्यूमेंट हैं। बनाया इनमें जो सबसे आज के बड़ी दिन तक मिस्ट्री खड़ा ये है। है कि सोचकर देखो पिरामिड्स कैसे बनाए 4500 गए साल थे तक और कोई इनका बिल्डिंग असल बनी रहे, मकसद क्या इतनी था। जलती हुई गर्मी सालों में की मेहनत तूफान और आए, रिसर्च के बारिश बाद आए, हमें ये वेदरिंग हो, बताया जाता दुनिया है में कि कोई भी इतनी पिरामिड्स बड़ी इतनी एंशिएंट पुरानी चीज इजिप्शियन नहीं है जो आज तक फेरोज के सरवाइव कर टूम्स पाई हो। हुआ तो करते आखिर थे। कैसे हो ये पाया ये फेरोज सब? आइए इजिप्शियंस समझते के हैं लिए दोस्तों एक किंग इस से पिरामिड का बढ़कर खुदा रहस्य का दर्जा आज रखते के थे, इस जिनको वीडियो में। पिरामिड्स में The ही Great दफनाया Pyramid जाता is था। arguably लेकिन असल the में most आज तक enigmatic structure इजिप्टोलॉजिस्ट on the और face of the आर्कियोलॉजिस्ट earth. को पिरामिड्स में से Built किसी around एक फेरो 2500 की BC, मम्मी भी नहीं it मिली, is the बल्कि tallest कहीं भी structure on किसी Earth. भी पिरामिड से For more आज than तक कोई मम्मी 3,500 मिलने का years, एविडेंस built as नहीं मिला है। gargantuan tombs हमारे of पास shining जिस white चीज का limestone. एविडेंस है The वो ये है pyramids कि were designed ग्रेट to hide पिरामिड dark secrets of the 23 dead. लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स की मदद से बनाया गया इतिहास में था। दोस्तों एक जितना एक पीछे ब्लॉक जाते हैं करीब उतना ही एक मुश्किल हाथी होते के जाता है वजन शॉर्ट जितना शॉर्ट भारी पता है। लगाना इसकी कि बेस exactly तकरीबन क्या हुआ 13 था, एकड़ पर कैसे फैली हुआ था हुई और है कब और हुआ। इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें ये भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितनी एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि पिरामिड्स की बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर हजरात हैं उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आजकल के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। हत्ता कि हमारे पास इस चीज का भी एविडेंस है कि पिरामिड की चारों साइड वॉल्स जिनको 5 टन वजनी स्टोन ब्लॉक्स रखकर एक खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर्स है। अगर इन चारों में कोई डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं है, यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट हैं। बात अभी तक यहाँ खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड बनाया था उनको हजारों साल पहले भी अर्थ की साइज का अच्छी तरह इल्म था। ये पॉइंट गौर से सुनिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दियों में दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं, इसका बिल्कुल ही उलट गर्मियों में पाया जाता है जिसमें रातें छोटी तो दिन बड़े हो जाते हैं। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने ही होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। बाय द वे, इस मोमेंट को, इस घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو ڈیٹس میں 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ 12 گھنٹوں کو اگر سیکنڈز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 43,200 سیکنڈز بنتے ہیں۔ اگر 43,200 کو دی گریٹ پیرامڈ کی ہائٹ سے ملٹیپلائی کیا جائے تو اس کا جواب آتا ہے 6,333 کلومیٹرز۔ یہ اتنی ہی لمبائی ہے جتنی ارتھ کے پولر ریڈیس کی ہے۔ اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو پیرامڈز بنانے والوں کی کیلکولیشن 99.63% ایکوریٹ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی کو انسیڈنس ہے، کوئی اتفاق ہے، لیکن پیرامڈ کی بیس کا پیری میٹر جو کہ 0.921 کلومیٹرز ہے، اس کو اگر 43,200 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو جواب آتا ہے 39,804 کلومیٹرز۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سرکمفرنس آف ارتھ یعنی ارتھ کے پورے ایک گول چکر کے مقابلے میں 99.34% ایکوریٹ ہے۔ کو انسیڈنس تو صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے، لیکن 99% سے بھی زیادہ ایکوریٹ رزلٹ وہ بھی 2 مرتبہ آنا ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ کئی لوگوں کا ابھی بھی ماننا ہے کہ یہ محض صرف ایک اتفاق ہے، لیکن جیسا کہ ابھی ہم نے جانا کہ 43,200 جس کا تعلق سولر ایکونوکس سے ہے، یہ ایک اور جگہ پر بھی